एडवांटेज मिलने वाला है। बट अगर हम लोग बात करें कि पहली पारी में कितना स्कोर बन सकता है, तो भाई देखो जिस तरीके का यहाँ का पिच है, आई गेस 170 175 जो है दोस्तों इस ग्राउंड के ऊपर आराम से बन सकता है। ज़्यादा बड़ा ये मैदान नहीं है। सामने की बाउंड्री देखी जाए तो यहाँ की जो है करीब 74 मीटर लंबी है। वहीं आपको लेग साइड की बाउंड्री 72 मीटर की और ऑफ साइड की बाउंड्री 68 मीटर की देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों ग्राउंड जो है ठीक ठाक है, तो ऐसे में एक अच्छे स्कोर की उम्मीद यहाँ पे हम पाकिस्तान की टीम से रख सकते हैं। और वैसे अगर हम लोग बात करें कि इस मैच में तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलेगी या स्पिनर्स को, तो आपको बता दूं कि इस मुकाबले में जो है तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है एज कम्पेयर टू स्पिनर्स। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ के विकेट को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम फ्लैट विकेट है, साथ ही में इसके ऊपर हल्के फुल्के क्रैक्स नजर आ रहे हैं, जिसका साफ ये मतलब है कि तेज गेंदबाजों को यहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस मिलेगा और शुरुआती के ओवर्स में हमें जो है स्विंग देखने को मिल सकता है, जो कि एक बड़ा फैक्टर है जिसके चलते तेज गेंदबाज काफी विकेट जो है दोस्तों निकाल जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो आपको बता दूं भारतीय टीम में आपको टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और अक्षर पटेल मौजूद हैं। और गेंदबाजी के रूप में रविचंद्रन अश्विन, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जो दोस्तों आपको नजर आएंगे। यह है भारतीय टीम का प्लेइंग 11। और वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की टीम में आपको टॉप ऑर्डर में मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शान मसूद और हैदर अली नजर आएंगे। वहीं मिडिल ऑर्डर में इफ्तिकर अहमद, आसिफ अली और शादाब खान मौजूद हैं। और गेंदबाजी में आपको मोहम्मद नवाज, शाहिन शाह अफरीदी, नाशिम शाह और हारिश रौफ जो है नजर आएंगे। यह है दोनों ही टीम का कंफर्म प्लेइंग 11 दोस्तों आज के इस मैच के लिए। तो तैयार हो जाइए आप लोग इस बड़े मुकाबले के लिए। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। और आपको याद दिला दूं कि इस मैच की जो फैंटेसी टीम है वो मैंने टेलीग्राम पे दे दी है। और आपको मालूम होगा कि कल की हमारी टीम से जो है यूजर्स ने ग्रैंड लीग जीता था, तो अभी के अभी जाइए और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला सवाल हमारे पास आया है कि भाई पहली पारी में जो है कितना स्कोर बन सकता है कि और ओपनिंग कौन करने आएगा। देखो यार पहली पारी में आपको बता दूं कि पाकिस्तान की ओर से ओपनिंग करेंगे रिजवान और बाबर आजम, दोनों बेहतरीन बल्लेबाज हैं इस टीम के। और अगर हम इसका सवाल जवाब दूं मैं आप लोगों को कितना स्कोर बनेगा, तो आई गेस यार पाकिस्तान जो है 165 170 के करीब जो दोस्तों स्कोर यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि एक अच्छा स्कोर हो सकता है इस ग्राउंड के अनुसार। तो चलिए देख लेते हैं यार क्या होगा इस मैच में। बस हमें थोड़ा सा और इंतजार करना है। आपको बता दूं भारतीय टाइम के अनुसार ये मैच जो है 1:30 पे शुरू होगा और आप लोग इस मुकाबले का लाइव कवरेज जो है हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। चैनल को यार अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको वो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि दोस्तों जैसे मैं लाइव आया करूं आप लोगों को जो है पता चल जाया करे। और वेदर रिपोर्ट की बात करूं तो भाई एकदम क्लियर स्काई है भाई, बारिश आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों कि एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिलहाल अगर आपको ग्राउंड अपडेट दूं तो बता दूं आपको कि पूरा का पूरा स्टेडियम जो है दोस्तों यहाँ पे दर्शकों से भरा पड़ा है। दोनों ही टीम के फैंस जो है दोस्तों काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रवि शास्त्री जो कि दोस्तों आज के मैच जो ऑफिशियल कमेंटेटर है, यानी कि इनकी कमेंट्री से और भी ज्यादा जो है दोस्तों इस मैच में मजा आएगा। तो तैयार हो जाइए आप लोग इस बड़े मैच के लिए। और यहाँ पर आपको बता दूं हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Did you see the emotion on the face of Rohit Sharma? Did you see that? He has played so much cricket for his country. Ladies and gentlemen. And that was just one example of the emotion. Let's have a look at the two teams. Pakistan batting first with Babar Azam, Mohammad Rizwan, Shah Masood, Shadab, Haider Ali, Iftikhar Ahmed, Nawaz, Asif, Afridi, Naseem and Ralph. And for India bowling first. Yes, India pretty much the expected side. Ashwin playing in this game. It's a tactical move ahead of Chahal. Otherwise, much as expected. They've got the three fast bowlers. Mohammad Shami playing a game after almost a year. There's Bhuvaneshwar Kumar and there's Arshdeep Singh.
still you can see people outside trying to get in. They've come on the trains, they've walked from the city. Impossible to get the cars close to this ground. The security is so strong. It's going through their mind. What is going through their mind? So much experience, so successful. This is huge. The stage is certainly set here at the mighty MCG for what will be a huge matchup. Can you hear that? It sounds like giant footsteps. It looks like the big time players are here to play. The big-time players have certainly arrived. Just how cool was that? And two of the mightiest that Pakistan had produced in recent years, Babar Azam and Mohammad Rizwan, have been entrusted with the job of getting them off to a great start. And for India, the new ball attack. Yes, and Bhuvaneshwar Kumar, Rohit Sharma said at the toss he's looking for some swing. He expects it to swing because it's pretty windy out there. And if anyone swings it from this Indian team, it will be Bhuvaneshwar Kumar. So the stage is set. The nerves will be jangling, not just for the two Pakistani batsmen out there, but the Indian team, Bhuvaneshwar Kumar in particular, want to get these first two deliveries out of the way. As a batter, you would want to make some contact back on ball as soon as possible. Touches the occasion, even the biggest will feel the heat. Well then, look, we'll just let the crowd count us down. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Here we go. All set. All set here at the G. It'll be Kumar. Two slips behind, waiting just in case there's a little bit of early movement. Good pace. Just a hint of movement. Just seeing this pitch as well, I think that carry will be good. If there's any movement, it will be in the initial overs. This comes across as the pitch once the ball gets a little older to come onto the bat and encourage stroke play as well. Bit of bounce, little bit of bounce, and that's wrapped them on the hand, I think, and you don't like to see that with your wicketkeeper. Smashing into the right hand there, and it has caused some pain. That can often happen on Australian tracks where the bounce can be steep. Especially for batsmen coming from the subcontinent, that's the adjustment you got to make. Just leapt it in. And it's hurt him. No doubt about that, because he reacted very quickly in taking those gloves off. He's in agonizing pain. Well, it's the right thumb. And I repeat, he is the wicketkeeper as well. So this is an issue for Pakistan after two deliveries, just two deliveries, Ravi. Michael Clark did his assessment of the pitch and said he wouldn't mind batting on this pitch first because he felt that putting a score on the board with all this pressure later in the evening might just be the way to go. Having said that, in the last 6 occasions these two sides have met, the side chasing has won. And maybe that's the reason. No question. I think
both batsmen would have opted to field. I mean, both captains, and Babar Azam said it at the toss. Seven of the last two, Ravi, 7 of the last 8 have been won here at this ground by the team chasing. So they do their homework. You've just come out of the coaching role. How much homework do you do when you look at those stats? How much do you bring that into play? Little bit of movement, just enough. Yes, you bring a lot of that into play, Smithy. And more important, you look at the contest between the two teams. And you look to see what the other team prefers doing and what the other team doesn't prefer doing. So in both cases, teams that would have won the toss would have fielded. It's overcast, as Rohit mentioned, and he was looking for some swing. Terrific start this from Kumar. He is putting all sorts of pressure on Rizwan. Perfect. Our officials for this evening, Rod Tucker, standing in his 49th T20 International. A local man, of course, and the very experienced Murray Erasmus, standing in his 38th. Two of the senior citizens of umpiring in world cricket. And I mean that respectfully. And they're very good at what they do. You last for that long. There's movement. There is movement. I think India right now are happy that they're doing this part of the game. And they can control it. And what you don't want as a bowler is to be too greedy. And Bhuvaneshwar Kumar is experienced enough. He knows he's got to get the ball in those areas. Let the pitch do the rest. Let the conditions dictate. Oh, brilliant stop. Brilliant stop from Rahul. He saved a lot of runs there. It will be the first run for Pakistan. It could quite easily have been a lot more. Yes, an excellent take from Dinesh Karthik, because that moved late. He had to react late. Very late movement, and it's exaggerated. Brilliant from Karthik. It really was. That was travelling with swing. As was that. What an eventful first over. All the pressure coming from India. Cracking start, 1 for none. We saw Bhuvaneshwar Kumar swing it both ways in that first over itself. Front on spin vision, please.